So hello everyone. Today we will be doing control, organizational control. Okay, organizational control. What is control? Okay, control refers to basically managing the activities and keeping a tab on them. Okay, an effective organizational control is something जब आप अपनी activities को वापस track के ऊपर लेके आते हो. So that is what the control is. That is deviations को remove करना. Okay. An effective organization is one where managers understand how to manage and how to control. जब तक कि enough control system place पे नहीं होंगे, it will lead to lot of confusion and chaos in the organization. Okay. अब कंट्रोल को डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. अगर हम की बात करें तो इट रेफर्स टू मशीन या पीपल उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल के अंदर रखना. ओके. इन मैनेजमेंट एज एन अथॉरिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि किसी को सुपरवाइज करना, किसी के ऊपर अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना, वो उसको हम कंट्रोल मानते हैं. राइट. सो डिफरेंट जगह पे कंट्रोल का मतलब डिफरेंट होता है. समटाइम्स इट रेफर्स टू डैमेज कंट्रोल ऑल्सो, sometimes it refers to crisis control also, and sometimes it refers to exercising authority also. What is the nature of control? As an activity, you must be knowing that out of the 5 functions of management, one of the function of management is control. Right? So control is a function or one of the 5 activities of management. Okay. What is the nature of control? First, it is the function of every manager. That is, manager at all levels have to perform this function in order to contribute towards the organizational goals. Second, it leads to appraisal of activities. That means कि जो आपने पास्ट में काम किया है, वो काम किस तरीके का किया है, वो हम कंट्रोल से जज करते हैं. ठीक है. द डेविएशंस इन द पास्ट मतलब आपकी दो चीजें होती हैं इसके अंदर कि आपने जो पहले काम कर लिया है, ये उसको जज करता है कि वो काम ठीक तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है. अब वो कैसे जज करता है? बाय comparing your actual performance with your standard performance. और standard किस में laid down किए जाते हैं? Planning के अंदर laid down किए जाते हैं. So control implies taking the corrective measures, and control implies taking the corrective measures once the deviations have been identified, ताकि वो problems आपको दोबारा future में ना आए या आप उसको एक feedback की तरह treat करो. Okay, control can be exercised only with reference to plans. So planning के बिना control कुछ भी नहीं है, and planning is nothing without control. So both of the activities are in line with each other. दोनों एक दूसरे के लिए एक base create करती हैं, क्योंकि planning के अंदर सारे के सारे standards, objectives laid down किए जाते हैं, and in comparison to them only the performance is evaluated in control. नेक्स्ट इज कंट्रोल इज अपोजिट ऑफ फ्रीडम. ठीक है. आप ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेशन अलाउ करते हो, यू अलाउ एवरीवन टू कीप देयर ओपिनियन, बट व्हेन इट कम्स टू कंट्रोल, इट मीन्स कंट्रोलिंग, इट मीन्स कीपिंग अ टैप ऑन द एक्टिविटी ऑफ अदर पीपल. सो वी ऑल्सो कंसिडर कंट्रोल एज अपोजिट टू फ्रीडम. ओके. नाउ इंफॉर्मेशन और फीडबैक जनरेट करना कंट्रोल का मेन पर्पस होता है. दैट इज आपको प्लान्स के ऊपर दोबारा लाना, इंफॉर्मेशन जनरेट करना कि आगे के लिए न्यू लर्निंग क्या है, एक फीडबैक लेना. दैट इज द मेन पर्पस ऑफ कंट्रोल. देन इट इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी. आप जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इट इज अ साइकिल, इट कीप्स ऑन गोइंग. सिमिलरली कंट्रोल also keeps on going. Once you start to put the plans into action, the control becomes the inevitable activity. You have to keep the activities under control. Okay. Now, planning is very important element of control. Planning and controlling, although they are the two separate functions of management, but they both are interrelated. But first of all, we will study how they are different from each other.
Planning is all about looking ahead, मतलब future में देखना, but controlling is looking in the past. Okay, that means पीछे आपके actions को देखना कि आपने ठीक actions किए हैं या नहीं किए हैं. दूसरा difference क्या है? Planning is the first function of management, and if we go by the cycle, then the control is the last function of management. Okay, but despite these differences, despite the difference in the objective, the common purpose that they have is to achieve your goals effectively and efficiently is the main purpose of both planning and controlling. So how are they related to each other? First of all, planning can be successful only when there is controlling. आपने plans laid down कर दिए हैं, you are acting on those plans, but you are deviating again and again from what was decided in the plans. अगर आप बार बार deviate करोगे तो it will lead to unsuccessful planning, मतलब plans का कोई purpose नहीं रह जाएगा उस time पे, ठीक है? So therefore planning is very important when it comes to controlling. Okay, now next is controlling is blind without planning. That means control का कोई purpose ही नहीं है अगर plans नहीं होंगे तो, ठीक है? क्योंकि आपके objectives जो हैं वो पहले advance में set नहीं किए गए हैं and all of that, तो controlling का कोई purpose ही नहीं है अगर plans already laid down नहीं किए गए हैं, ठीक है? If the standards are not determined, there's no justification left for control, and standards are determined under the planning only. Okay, so therefore planning and controlling are interrelated to each other. That is, planning is unsuccessful without controlling and controlling is blind without planning. Now, how to exercise the control in the organization? सबसे पहला purpose है, सबसे पहली चीज है कि establish standards to measure the performance. That means first step of controlling is to plan. Okay, plan, establish standards in the organization. Okay, आप अपने objectives set करो, अपने goals set करो, और different departments के लिए, different levels के लिए of management के लिए, and overall for the organization as a whole, you design the standards in the organization. And then once those standards have been done, आपके further steps शुरू हो जाते हैं, that is to organize, that is to put those plan into action. The second step is to measure the actual performance, that is आप measure करना कि actually में कि क्या आपने perform किया on the basis of, it is done on various bases. आप financial statements prepare करते हो, cash flow statements prepare करते हो, profit and loss account, liquidity ratios, cash ratios, जितना भी है, return on investment, certain important parameters को आप calculate करना. This is what we mean by measuring the actual performance. Okay. Now, once the actual performance is listed on the right hand side and standards are written on the left hand side of the table, now you need to create a third column, that is the column of the comparison between the actual performance and the standard performance. Okay, so what you need to do is that you need to compare and you need to note down the positives and negatives. Positive कब होता है जब actual performance is better than the standards laid down, and negative कब होता है जब actual performance falls short of the standards given. Okay, so you start putting the positive and negative signs in front of that table. Now you need to understand that positive deviations are good for you and negative deviations are bad for you. So you need to analyze in that manner only. Okay, and then accordingly, negative deviations के लिए positive deviations are obviously in the interest of the organization. So you need to take the corrective actions with respect to the negative deviations. Okay, so the fourth step is to take the necessary steps for the negative deviations. What is the importance of organizational control? Why you need to control? Okay, first of all, it reduces the risk. Okay, it reduces the risk of non-conformity of actual performance with the main goals of the organization. यानी कि जब आप regularly at intervals control exercise करते रहते हो, supervision करते रहते हो, तो in that case there are great chances, there is great probability that your actual performance will match up with the standard performance. Okay, लेकिन अगर आप proper tap नहीं रखते हो, then there is a possibility that the plan will fail and जो risk या threats future के हैं that will come in
in future, right? Then it is the basis for future action. The end result of controlling is that एक तो आपके plans कितने successful हुए हैं कितने नहीं हुए, you will get to know that. किन एरियाज में डेविएशंस आ रही हैं, आपको उन एरियाज में आप काम कर सकते हो, नेगेटिव डेविएशंस को करेक्ट कर सकते हो. यू कैन टेक अ फीडबैक एंड अ लर्निंग फॉर द फ्यूचर कि ये काम आपको करना है या ये काम आपको नहीं करना है. यू ऑल्सो गेट द फीडबैक फॉर प्लानिंग एज वेल कि आपके स्टैंडर्ड्स जो हैं कहीं वो ज़्यादा ही हाई तो सेट नहीं किए गए हैं जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो शॉर्ट पड़ रही है. So it would be better to say that future long-term planning is not possible until control information is available in time to the managers for the operation of work. So that information and feedback is provided by the control. So therefore it is the basis for future action. Important for large scale business. This is control is very important for the large scale business which have a lot of activities and departments, right? In large-scale business in modern times, it is quite impossible to work without proper policies, procedures, and quality of different varieties of goods are there. Therefore, large-scale organization में a tap is required on the day-to-day activities of the organization. So control is very important in case of large-scale organization. Then it points out the weaknesses in the management system. ठीक है, कुछ अनसीन अननोन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो कि जब हम काम कर रहे होते हैं हमें तब पता नहीं चलता. बट इफ वी गो बैक टू रिविजन, इफ वी गो बैक टू फीडबैक, इफ वी गो बैक टू असेस द पास्ट परफॉर्मेंस, वो वीकनेसेस हमें पता चलनी शुरू हो जाती हैं. सो इन दैट केस हमारी जो इम्पोर्टेंट वीकनेसेस हैं उनको हाईलाइट करता है a good control system. Okay. Now the next point is facility of coordination. Management and coordination of the business and activities and worker is very important. It control binds all the workers, their goals, their activities to each other. Control play a role of a middleman between the workers and management, and it serves both the purposes. It provides information to the workers also कि ये time limit आपकी बच गई है, इस time limit में आपको इतना काम पूरा करना है. A regular feedback to the workers in the form of control can be helpful for them in establishing the coordination with each other. सिंप्लीफाई सुपरविजन. जब सिस्टमैटिक कंट्रोल सिस्टम जो है वो सुपरविजन रेगुलर टैब को हटा देता है, बिकॉज व्हेन यू हैव इन आजकल हम देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर्स भी ऐसे इंस्टॉल किए जाते हैं जिसमें आप जैसे ही कुछ डालते हो एंड इफ देयर इज डेविएशन तो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है. सो अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टमैटिक कंट्रोल सिस्टम है इन प्लेस, ठीक है, तो सुपरविजन becomes it is very easy to supervise your subordinates, okay, because you have a ready-made system to assist you with the control. Now what are the limitations of control? As I already told that control का opposite है, control is opposite of freedom. That means workers की freedom के ऊपर tap रखना, उनको control करना उनकी activities को, that you are getting more informal or they should concentrate more on work, such kind of dictations to them. उस केस में workers feel a sense of loss of freedom. So this is one of the limitation of control, is that control may make workers feel that they are being controlled unnecessarily or they are being dictated unnecessarily. So regular feedback, regular report cards dena workers ko, it sometimes leads to irritation and demotivation in the workers. Now second is that sometimes there are factors which are beyond the control of the organization, जिसमें आप control exercise नहीं कर सकते हो. For example, macro environmental factors जैसे कि political factors, economic factors, all of those आप वहाँ पे control exercise नहीं कर सकते हो, so therefore control fails in such cases. Okay. Next is that प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रोल. अगर प्लानिंग ही अच्छे से नहीं हुई है तो कंट्रोल का कोई
पॉइंट नहीं है, कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो आप अच्छे से, क्योंकि अगर हम ये कह सकते हैं दैट कंट्रोल का क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द प्लान. Okay. Next point is that control is a costly affair. It requires a lot of efforts and investment, particularly in the thing जो हो चुकी है. Okay, उसको study करने में, उसको correct करने में, you are making so much of effort. Rather, sometimes the action is required for the future rather than looking at the back. So control is a very costly affair. Along with that, बहुत सारी organization have installed proper systems of supervisions and technological system also. तो therefore उनको install करने में भी बहुत investment, time, money, all of that goes. Okay. Now, next is types of organizational control. There are two types of control, strategic and operational control. Okay, इसके लिए हम एक illustration देखते हैं. That imagine that you are the captain of a ship. The strategic control makes sure that your ship is going in the right direction. Okay, management and operating controls make sure that ship is in the good condition before, during and after the voyage. Okay, that means organizational control के अंदर जो strategic control है वो सिर्फ overall ship के मतलब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन अपने राइट मिशन या विजन की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है वो देखता है. बट डे टू डे एक्टिविटीज में ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रही है दैट इज डिसाइडेड बाय द ऑपरेशनल कंट्रोल. So here is the difference between the strategic control and operational control. Strategic control is concerned with tracking the strategy as it is being implemented, detecting the areas of problem or maybe the potential problems area and making the necessary adjustment. So strategic control is about correcting the strategic mistakes that we are making, or it is about ensuring that you are going in the right strategic direction that you have decided for yourself. It is basically long term in nature, and it is basically look at the wider picture rather than small parts of the organization. Operational control, on the other hand, is related with the day-to-day activities of the organization. It is a very short-term process of control, short-term plans के ऊपर ये concentrate करता है, and it is related with different departments rather than overall organization. ठीक है? So it is exercise. Operational control is day-to-day, short-term, and keep a tap on the small activities of the organization rather than the strategic key activities of the organization. So operational control is very routine in nature. इसके अलावा आते हैं on the basis of exercise, that how you exercise the control, उसके ऊपर भी आता है that there are three types of control: proactive, concurrent and feedback control. Proactive मतलब आप पहले से ही you are very well aware of the potential problems जो कि आ सकती हैं, and what you do is that आप एडवांस में उनके लिए प्रिपरेशन करके चलते हो. हम इनको कंटिंजेंसीज भी कहते हैं. दैट मीन्स अगर फ्यूचर में ये कंटिंजेंसी आती है तो उसको आप इस तरीके से कंट्रोल करोगे. ओके, सो दिस इज बीइंग प्रोएक्टिव. ओके, कि एडवांस में ही देख लेना. इट इज सिमिलर टू द एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग. इनफैक्ट proactive control is similar to the planning. Then there is second control, जो आप जैसे जैसे एक्शन करते हो वैसे वैसे आपको करेक्ट करता है. concurrent control, that means monitoring and adjusting the ongoing activities. ओके, साथ के साथ करेक्शन करना उनके अंदर. डे टू डे ऑपरेशनल कंट्रोल भी कहते हैं हम कॉन्करेंट कंट्रोल को. एंड लास्ट इज फीडबैक कंट्रोल. दैट मीन्स वंस यू हैव डन एवरीथिंग, वंस द साइकिल इज ओवर, वंस द टाइम पीरियड इज ओवर, then you prepare your balance sheet, your other books of accounts and all of that, and you take a feedback for the next period, that what all mistakes you should not do in that activity. Okay, so this is what we call as feedback. Now, the next is principles of effective control. What all things you should keep in mind while controlling, while exercising, or while performing the control function. Okay, the first principle is that you should ensure the flexibility.
ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि आपके यहाँ पे स्कोप होना चाहिए इन टू अकोमोडेट एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस दैट माइट अराइज। मैंने आपको अभी बताया था दैट there are certain factors which are beyond the control of the organization. Now with respect to such factors, you should go for flexibility. You should be flexible enough to accommodate all those changes. So this is one of the first principle of effective control, that is to ensure flexibility. You should be very, very flexible with respect to your working. Second is ensuring accuracy. Of course, if you don't have accurate information, you will not be able to measure, compare the actual measure the actual performance and compare it with the standard performance. You can't do that, so it becomes very costly and harmful. So lack of accuracy in the systems may in fact make you waste time in the futile activities. So make sure that you have good control systems that provide you accurate information on time. यहाँ पे एक example भी दिया हुआ है. For example, sales estimates are artificially high. A manager might either cut advertising on the assumption that it is no longer needed or increase advertising to enhance sale. तो दोनों possibility हैं. अगर आप अपनी sales को overestimate कर रहे हो या underestimate कर रहे हो, तो manager may take actions which can work in the opposite direction rather than working in the right direction. So you should have accurate measure. You should not overestimate and you should not underestimate as well. Then control must function harmoniously with the existing processes. ऐसा नहीं है कि आप existing process को रोक के control को exercise कर रहे हो. No, control should work simultaneously. आपके existing काम में वो hindrance नहीं आनी चाहिए because of the control. The control system should not be such कि वो existing काम में hindrances डाले. कंट्रोल सिस्टम शुड बी एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉइज. अगर मान लो आप उनको सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रख रहे हो एंड एम्प्लॉइज आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद दैट सॉर्ट ऑफ कंट्रोल, तो आपका वो कंट्रोल सिस्टम काम नहीं करेगा. सो योर कंट्रोल सिस्टम शुड बी सच दैट इट हैज एक्सेप्टेंस विद द एम्प्लॉइज. उनको मॉरली, एथिकली, पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उन कंट्रोल सिस्टम से. Okay, next is availability of information when needed. Information का होना is the key to exercise of control. Okay, so this is very important that the right information at the right time should be available to the employees. Next is economic feasibility. Control should not be too expensive. अगर आपका कंट्रोल बहुत एक्सपेंसिव है, वो आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को हार्म कर रहा है एट दैट टाइम. सो आपका कंट्रोल मान लो इस नॉट ब्रिंगिंग एनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट टू यू, तो ऐसा कंट्रोल सिस्टम आपको इंस्टॉल नहीं करना चाहिए. ओके, so you should compare the benefit of installing the control system with the cost of installing the control system. If the benefits are more, then the control should be there. If the costs are more, then control should not be there. This is now the key principle of control, that is management by exception. ठीक है, that is अगर आपको effective control करना है तो आप अपनी energy उन चीजों पे लगाओ जो कि key areas हैं. Okay, do not waste your energy on controlling everything. Okay, so there are two principles in management by exception, is that find a significant deviation. मैंने आपको बताया कि list down your positives and list down your negatives. आप उसमें देखो कि पॉजिटिव कितना पॉजिटिव है और नेगेटिव कितना नेगेटिव है. If the negative deviation is just within the range of +5 to -5, तो आप ये डिसाइड करो whether you want to exercise the control or not. Okay, if there is a significant deviation, अगर बहुत ज़्यादा ही deviation है तभी control करो, otherwise leave it. Okay, next is that deviation किस area में है. Now you need to identify the key area जिसमें deviation हो. If the deviation is not there in the key area of the organization, then you can ignore them also. Okay, so this is the principle of management by exception, that if you will try to control everything, you may end up with controlling nothing. इसीलिए control को inexpensive बनाने के लिए, उसको cost friendly बनाने के लिए, to save the cost, exercise the principle of management by exception.
The process of management by exception is essential about ensuring that management focus on the policies, strategies, decisions where larger deviations are there. And in the context of management by exceptions, managers need to know what tasks and process are routine and can be dealt in the routine manner, and what tasks and routine are strategic in nature. Sometimes the problem is more of strategic in nature rather than operational problem. So top management should not waste their time in the operational control. It should focus on the areas of strategic control. Merits of management by exception: it saves times, energy and money. It saves energy of the top management, and it leads to optimum utilization of resources. On the other hand, management by exception sometimes ऐसा एरिया आपका अभी प्रॉब्लमेटिक आपको शायद वो नहीं लग रहा है because of the smaller deviation may lead to larger problems. So management कई बार उस चीज को ignore कर सकती है, which may become bigger later on. Okay, so very emphasizing management by exception. Now next comes the techniques of control. Okay, next we have is the techniques of control. Okay, so सबसे पहली technique of control है budgetary control, that is preparing the budgets and controlling it. Okay, a budget is a planning and controlling device. It is both used for planning as well as control purposes. Budgetary control is a technique of managerial control through preparation of budgets. It is the essence of financial control. It is one of the techniques जो financial control की category में आती है. Budgetary control is done with respect to all aspects of the business, be it income, expenditure, production, capital, or revenue. Budgetary control is basically done by the budget committee. Okay, now this is आपको दिख भी रहा होगा कि एक budget report यहाँ पे डाली गई है, which is called as budget variance report. Budgets में basically आप पहले से ही decide कर लेते हो कि इस area में मुझे इतने पैसे लगाने हैं, और then you see कि actual पैसा लगा कितना है. अगर एक्चुअल पैसा आपके बजट से ज़्यादा लगा है, दैट मीन्स देयर इज अ नेगेटिव डेविएशन, और एक्चुअल पैसा अगर आपके बजट से कम लगा है, दैट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव डेविएशन. सो ये बजट वेरिएंस रिपोर्ट, तो बजट दोनों चीज़ों के लिए काम आता है. सबसे पहले जब आप एक स्टैंडर्ड बजट एलोकेट करते हो हर एक चीज़ के लिए, तो दैट इज प्लानिंग. जब आप उन्हीं को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हो, तो दैट इज कंट्रोल. Okay, different types of budgets are prepared for different purposes. Financial budgets होते हैं, operating budgets होते हैं, non-operating budgets होते हैं. Financial budgets कौन से होते हैं? जैसे cash budget, balance sheet budget, capital expenditure budget, जहाँ पे आप funds की allocation की बात करते हो. ऑपरेटिंग बजट में आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को देखना कि किस में कितना रॉ मटेरियल जाना चाहिए, किससे कितना रॉ मटेरियल, कितना फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होना चाहिए. तो स्टॉक का काउंट रखना, उन सब का काउंट जो डे टू डे एक्टिविटीज में आपको हेल्प करता है, वो ऑपरेटिंग बजट होते हैं. नॉन ऑपरेटिंग बजट्स आर रिलेटेड टू दी कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट बजट, वेरिएबल कॉस्ट बजट, ऑल ऑफ दैट कम्स इन दी नॉन ऑपरेटिंग बजट्स. Essentials of budgetary control. Key to successful budgeting is to set appropriate standards. अगर आपने budgeting ढंग से नहीं की है, तो control भी ढंग से नहीं होगा. Budget making is task of top management. तो budget के लिए committed रहना is also the task of the top management. टॉप मैनेजमेंट के सपोर्ट के अलावा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का भी पार्टिसिपेशन चाहिए. अगर वो बजट उनको आप बोलोगे कि दिस इज द बजट ऑफ द एक्टिविटीज, lower level management need to understand that they have to abide by the budgets of the organization. For budgetary control to work well, right information should be available at the right time for the analysis. Second is balanced scorecard approach, which is also called as a stakeholder approach to control. Balanced scorecard approach में क्या आता है?
it is basically ट्रेडिशनल मेजर ऑफ कंट्रोल से बहुत डिफरेंट है. ट्रेडिशनल मेजर ऑफ कंट्रोल के अंदर हम जनरली फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, जिसमें वी ट्राई टू मेजर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर्स, ऑल ऑफ दैट. ठीक है. But balanced scorecard approach talks about not only the financial control but qualitative control पे भी ध्यान देने के लिए कहती है कि किसी का attitude, किसी का behavior, किसी की happiness, किसी की satisfaction, motivation level किस तरीके की है, informal organization में setup क्या है, politics का क्या level है. तो balanced scorecard approach looks at all the areas, whether it is financial, whether it is qualitative, whether it is quantitative, everything it looks for. So traditionally, financial accounting measures like return on investment and earning per share were used, but traditional financial measures आज की स्किल और कॉम्पिटेंसीज से कंपेयर को मेजर नहीं कर सकती हैं. सो वी नीड दिस टेक्निक ऑफ कंट्रोल, दैट इज बैलेंस स्कोरकार्ड अप्रोच. Okay, balance scorecard, a set of measures that gives top manager a fast but comprehensive view of the business. It includes financial measures, and that balance scorecard includes financial measures that tell the results of all actions already taken. Okay, and it complements the financial measures with operational measures of customer satisfaction, internal process, and the organization's innovation and other level of activities. Now this is a balance scorecard given to you, okay, with its various components. Okay, एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव हुआ है जहाँ पे गोल्स और मेजर्स लिख रखे हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन को एक ऑर्गेनाइजेशन की किस तरीके से मेजर करोगे. नेक्स्ट इज कस्टमर पर्सपेक्टिव कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, कितना खुश है आपके प्रोडक्ट से, उसके क्या फीडबैक है, वो कस्टमर पर्सपेक्टिव लिखोगे. इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज, आपके कंपेटिटर्स, आपके सप्लायर्स, आपके लेबर, आपकी ट्रेड यूनियन, वो आपके बारे में क्या कहती है, वो आप यहाँ पे लिखोगे. And then finally, what is the technology level, innovation, learning, knowledge management किस तरीके से हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, वो आप इस बॉक्स में लिखेंगे innovation and learning perspective में. तो बैलेंस स्कोरकार्ड 4 पर्सपेक्टिव्स को इकट्ठे मेजर करता है. फर्स्ट इज कस्टमर पर्सपेक्टिव कि कस्टमर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं. दूसरा कि आपके एम्प्लॉयज आपके बारे में क्या सोचते हैं. एम्प्लॉयज और दूसरे स्टेक होल्डर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं. तीसरा, आप इनोवेशन लर्निंग में कहाँ स्टैंड करते हो इन कंपैरिजन टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और इन कंपैरिजन टू द नेशनल एंड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स. एंड लास्टली, हाउ डू वी लुक टू शेयर होल्डर्स, यानी कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके की है, दैट इज और कैश फ्लो लिक्विडिटी की पोजीशन क्या है, दैट इज फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव. While giving senior managers information from 4 different perspectives, the balanced scorecard minimizes information overload, that is limiting the number of measures used. यानी कि चारों perspective में जो आपका tool है for measuring the customer satisfaction or for measuring the employee satisfaction, that should be comprehensive enough. वो confusion create नहीं करना चाहिए. For example, आपकी return on investment अगर अच्छी है but आपकी earning per share अच्छी नहीं है, so that might create confusion. So you should have limited number of measures that can give you a quick lookout into the things. Okay, by combining the financial, customer, internal process and innovation and organizational learning perspective, the balanced scorecard helps manager to understand the interrelationship. The understanding can help manager transcend traditional notions about functional barriers and ultimately lead to the decision making and problem solving. So balanced scorecard is a balanced approach because it looks backward also, it looks forward also. Okay, so it is a comprehensive technique of control. Now here it is one of the example is also given balance scorecard approach का. Financial perspective में survival है, cash flow statement की तरफ देखो. If you want to
आपको ग्रो करना है, देन यू लुक फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपकी अच्छी होनी चाहिए ग्रोथ के लिए. देन कस्टमर पर्सपेक्टिव कि आपने न्यू प्रोडक्ट्स कितने इंट्रोड्यूस किए हैं, कस्टमर पार्टनरशिप कितना है, ऑल ऑफ दैट. देन इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, टेक्नोलॉजी का क्या लेवल है, एडमिनिस्ट्रेटिव लर्निंग क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या लेवल है ऑर्गेनाइजेशन में, all of that. So this is a typical balance scorecard of a company. Okay. After this comes the accounting measures of control, which we have already talked about. Key financial measures of control, जिसके अंदर सबसे popular है return on investment and ratio analysis. Return on investment is a very useful technique for determining whether the capital invested in the business have been effectively used to generate the return or not. इसका फॉर्मूला होता है कंपेयर योर इनकम विद द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. इफ इट इज अ गुड परसेंटेज, दैट मीन्स आपका जितना भी पैसा लगाया हुआ है वो इनकम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है तो इसका मतलब ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपको कॉस्ट ज़्यादा दे रही है और इनकम कम दे रही है. ओके. सो टोटल इन्वेस्टमेंट में के अंदर आता है टोटल एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल. इनकम के अंदर आते हैं आप जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो बिफोर टैक्सेस और आफ्टर टैक्सेस, दैट इज अप टू यू. It is an effective control device and it also different departments के related भी आप return on investment निकाल सकते हो, different projects से related भी आप return on investment निकाल सकते हो. And as it is measured in percentage terms, तो आप compare कर सकते हो different departments को एक दूसरे के साथ, different projects को compare कर सकते हो. For example, अगर A department हमको 90% return on investment दे रहा है and there is another department which is giving 50% return on investment, then you can simply compare the performance of A department with the B department on the basis of percentage. Next is ratio analysis. रेशियो एनालिसिस के अंदर हम डिफरेंट रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी रेशियो, जो हमें लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बिजनेस बताती है. That is immediate liquidity की current assets in comparison to the current liabilities का क्या status है. Then there is solvency ratio कि बिजनेस अपनी डेट को पे करने में कितना कैपेबल है, अपने शेयर होल्डर्स के फंड्स को कितना अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है. अगर उसके ऊपर लाइबिलिटीज हैं बहुत सारी तो इट इज टोल्ड बाय सॉल्वेंसी रेशियोज. लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी के बारे में बताती है सॉल्वेंसी रेशियो. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन के बारे में बताती है, जिसमें हम दो तरीके की बड़ी सारी तरीके से हम प्रॉफिटेबिलिटी को देख सकते हैं. बट बेसिकली हम ग्रॉस प्रॉफिट को देखते हैं कि इन कंपैरिजन टू सेल्स हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है. सिमिलरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हम देख सकते हैं, जिसमें हम डे टू डे एक्टिविटी का जो हमारा एक्सपेंस है, वेदर आवर सेल्स इज केपेबल ऑफ टेकिंग दैट आउट और नॉट. सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एंड डिफरेंट तरीके से हम निकाल सकते हैं. Then PERT and CPM, program evaluation and review technique and critical path method. That means कि किसी भी एक्टिविटीज को करने के लिए what is the right process to do it, what are the right steps to follow in order to complete an activity. So basically PERT and CPM are not financial measures of control, they are basically systems of time control. कि अगर एक process में एक certain activity को करने में कितना time लगेगा, that is told by PERT and CPM. Any program consists of various activities and sub-activities. Successful completion of any activity depends upon doing the work in a given sequence within a given time. So it makes sure that the process are being carried out at the right time. CPM and PERT can be used to minimize the total time or the total cost required to perform the total operation. इसमें basically we give importance to the critical activities. Critical activities are those which have to be completed on time and which cannot be delayed. So in these techniques, the job is divided into various activities and sub-activities. From these activities, those activities are identified which are crucial.
Okay, so by controlling the time spent on the critical activities, you can be assured that time and cost are minimized. Next is economic value added, जिसमें हम economic profit के बारे में बात करते हैं. It is a measure based on the residual income technique that serves as an indicator of the profitability of projects undertaken. इसका underlying premise क्या है that real profitability occurs when additional wealth is created for shareholder and the project should create returns above their cost of capital. For example, again it is a technique just like return on investment कि आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो you should get more returns than the cost of that particular project. इसका फॉर्मूला है net operating profit after taxes minus invested capital into weighted average cost of capital. Okay, that आपका जो net operating profit है that should be more than what you have invested in the in that. Okay, and आप weighted average cost of capital भी ले सकते हो कि कौन सा project आपके लिए कितना important है. According to that you can weight the projects and calculate the weighted average cost of capital. Economic value added assess the performance of a company and its management through the idea that a business is only profitable when it creates wealth and return for its shareholder. EVA as a performance indicator is very useful. The calculation shows how and where a company created wealth through the inclusion of the balance sheet items. This forces managers to be aware about the assets and expenses while making their decision. However, the EVA calculation relies heavily on the amount of invested capital and is best used for asset-rich companies that are stable in nature. Companies with intangible assets such as technology businesses may not be good candidates for an EVA एवोल्यूशन, क्योंकि एसेट रिच कंपनीज में फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होती है, उनका अमाउंट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेक्स मोर सेंस देन द कंपनीज जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है. ओके, सो दीज आर द कंट्रोल एंड द टॉपिक of organizational control. Okay, so so what we have learned in today's class is that there are important questions with respect to the control. Is what is controlling and how is it different from planning, how planning and controlling are interrelated to each other. This is very important question. Second question is that what is the process of control, that is to lay down the standards, comparing the measuring the actual performance and comparing the two and taking the correct actions. Third question is that how is control important for an organization? How is control important for an organization? And last topic is that what are the various techniques of control? Yes, one of the important question is also what is management by exception and how it can be exercised, how it is an effective principle of control. Management by exception is very important. Techniques of control में जो सबसे important है, that is the balanced scorecard approach of traditional versus the modern techniques of control. The modern techniques of control involve the balanced scorecard approach. So these are the possible set of questions that might come in the chapter of control.